this or not. Yes, ma'am. Like you talk about cold and cough, ma'am. Yes, exactly. Yes, my family also suffering from cold See, and cough. I'm telling you, and it feels like this is another COVID wave, but it has flu-like symptoms. It's not severe. At least Yes. I feel this is what is happening. Because otherwise, I don't know, when we have flu, we don't feel like this. It feels really weird. Yeah. Maybe like ma'am, season change. That's why it's flow like. Maybe God knows what is the reason, but it's very bad. I'm feeling very tired. Like I'm not really ill, but I'm just feeling tired. That's it. Yes, ma'am. Like I am also feeling headache, See, little I head. also have headaches. Yeah. Everyone is having the same symptom. This is some kind of flu that is like going around, and everyone is getting it. Be very careful, guys. No, ma'am. This election is going. That's why Corona is not coming, ma'am. After election, why? Corona is not coming, or it is not being mentioned because Corona doesn't care about the election. But Yeah, ma'am. yes, it is not being mentioned. But I think this is another wave of COVID. It's just a very like a less severe strain, because as time passes, the virus loses its what to say severity, and it just gets weaker. So I think this is what is happening. Yes, ma'am. It's very communicable, like it's spreading very quickly. If one person gets, the entire family will get ill Yes, within yes, days. yes, ma'am. My neighbor also told me to yesterday told me my aunt's gets cold feel felt cold and cough, and then after one day my uncle also Yes, get. everyone is catching it very quickly. Yes, That's ma'am. why be very careful, guys. Wear your masks if you don't want to suffer from this at least. Yes, ma'am. Okay, ma'am. चलिए, let's continue then. We were discussing gerunds and infinitives. We will continue with that. थोड़ा सा recapitulate करेंगे कि gerund और infinitive में क्या-क्या अभी तक हमने किया है. Okay. And today we will make sentences with infinitives. I've given you a list of verbs for gerunds. आज infinitives करेंगे. Okay. So gerund में हमने सबसे पहले ये देखा that gerund is a verb like structure that looks like verb but it functions as a noun in a sentence. सिर्फ noun का काम करता है एक gerund sentence में, right? कैसे बनाते हैं? V4 form को लेकर बनाते हैं. We make a gerund, we form a gerund using the V4 form, that is eating, going, sleeping, dancing, reading, so on and so forth. It is different from the present participle, that is the V4 verb form, right? It is different from that. And gerunds can be used in 4 ways. 4 ways we can use gerunds. What are those? Subject, object, subject complement, object complement. इन 4 तरीकों से हम gerund को इस्तेमाल कर सकते हैं because it is a noun, right? And gerunds can be modified by both adjective and adverb क्योंकि उसमें दोनों के characteristics है. वो थोड़ा सा noun भी है, थोड़ा सा verb भी है. तो उसको change करने के लिए हम adjective भी use कर सकते हैं, adverb भी use कर सकते हैं. Okay. एंड जेरेंट फ्रेजेस, हाउ डू वी क्रिएट जेरेंट फ्रेजेस? जेरेंट फ्रेजेस कैसे बनते हैं? जेरेंट प्लस नाउन बन सकता है, जेरेंट प्लस एडवर्ब बन सकता है, जेरेंट प्लस एडजेक्टिव बन सकता है, जेरेंट प्लस प्रपोजिशनल फ्रेज बन सकता है. दिस इज व्हाट वी हैव सीन फॉर इन द इंट्रोडक्शन ऑफ जेरेंट्स, राइट? देन वी लुक्ड एट इट्स यूजेस. सबसे पहले तो सब्जेक्ट की तरह कैसे यूज करते हैं? सिंपल, वी जस्ट यूज इट एज द सब्जेक्ट ऑफ द क्लॉज. क्लॉज के सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, या तो जेरेंट को यूज करेंगे या जेरेंट फ्रेजेस को यूज करेंगे. Second, we saw that it is used as सब्जेक्ट कंप्लीमेंट. सब्जेक्ट कंप्लीमेंट की तरह यूज करते हैं. कब करते हैं? जब लिंकिंग वर्ब आ रहा है, राइट? जब हमारा लिंकिंग वर्ब आ रहा है तब हम सब्जेक्ट कंप्लीमेंट की तरह यूज कर रहे हैं जेरेंट को. थर्ड है एज ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रपोजिशन हो सकता है. सो प्रपोजिशन के बाद जैसे ही जेरेंट बिठेगा वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन बन जाएगा. और ये जो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन बनता है इट कैन लुक वेरी सिमिलर टू प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज. प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, बट दोनों बिल्कुल अलग अलग है. प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज में हमारे स्टार्टिंग में प्रेजेंट पार्टिसिपल रहेगा, आईएनजी फॉर्म रहेगा. एडवर्ब ऑफ प्रपोजिशन में सबसे पहले प्रपोजिशन रहेगा, उसके बाद तो हमारा जेरेंट आएगा. Okay, so this is the difference between our present participle and gerund phrase. जी मंजू जी. Ma'am, when good morning, ma'am. Good morning. बताइए. When preposition comes in front of gerund, what makes the sense after preposition?
It means that the gerund becomes the object of the preposition. Preposition का object बन जाता है, right? So वो जो पूरा का पूरा चीज बनता है वो बनता है adverbial prepositional phrase. Adverb का काम करता है sentence में. Understood? Yes, I know, ma'am. You taught us, but my question is, what makes the sense when it comes after preposition? मतलब क्या बनता है? Yeah, ma'am. It can mean a lot of things depending on what kind of sentence you are using. For example, I always get hiccups after sneezing. I always get hiccups after sneezing. मतलब हमेशा sneeze करने के बाद मुझे hiccups आती है, मुझे हिचकियाँ आती है. Okay, and it usually answers 3 questions: when, how, and why. When, how, and why. ये 3 questions वो जवाब देता है, क्योंकि when, how, and why is answered by adverbs और ये बन रहा है हमारा adverbial prepositional phrase. That is why it usually answers these questions. Understood, Manju? Yes, ma'am. When? Okay. Ma'am, How? when? Why? How? When? Why? Why? Right. Yes. Right, ma'am. Mostly it answers these 3 questions कि ये 3 चीजें, मतलब कोई काम हो रहा है, कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे क्यों हो रहा है, कब हो रहा है और कैसे किया जा रहा है. ओके, इन 3 चीजों का जवाब हमारा एडवर्बियल प्रीपोजिशनल फ्रेज दे सकता है, क्योंकि वो एडवर्ब का काम कर रहा है. ओके, एंड एडवर्बियल प्रीपोजिशनल फ्रेज में क्या होगा, पहले एक प्रीपोजिशन रहेगा, उसके बाद जेरेंड रहेगा. उससे हमें पता चलेगा कि ये जेरेंड है. और अगर वो शुरू ही हमारे आईएनजी फॉर्म से हो रहा है, पता चल जाएगा वो जेरेंड नहीं है, वो फिर क्या बन गया, वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया. राइट right, ma'am. Thank you. मोस्ट वेलकम. हरिदास, डू यू हैव अ क्वेश्चन? जी हरिदास, कोई प्रश्न है? No, ma'am. I just joined, so I think you're a new student. student, right? Yeah, right. Okay, so Haridas, if you find it difficult to understand, you can watch the previous videos. All right, सबके Yeah, recordings है, you can watch them, and then maybe you will understand better if you face any difficulties. All right, and you can of course ask questions. Yes, ma'am. Okay. चलिए. Okay, so this is what we have discussed. Then we saw that gerunds can be objects of the verb. Object of verb मतलब sentence का object. Simple, right? Anisha eats apples. Anisha subject, eats verb, apples हमारा object. So उस तरीके से हम gerunds को भी use कर सकते हैं as objects of verbs या object of the clause. So क्या बोल सकते हैं? I love painting. I love painting. I is the subject. Love is the verb. Painting is our object, that is a gerund, right? So a gerund functioning as the object of the sentence. So ये था gerund के 3 uses: subject, subject verb, complement, object. The next one was as object complement. Object complement मैंने आपको बोला है कि वो object के बाद ही आता है, right? If we are using gerunds, object complements will come after the object. And another thing to remember is the object complement that is a gerund. जेरेंड के द्वारा जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनाई जा रही है वो सिर्फ एक ही चीज हमें बताएगा ऑब्जेक्ट के बारे में, कि ऑब्जेक्ट अभी क्या कर रहा है या फिर ऑब्जेक्ट पास्ट में क्या कर रहा था. ओनली दिस थिंग, कि वो क्या कर रहा है या क्या कर रहा था. दैट्स इट. ओके, दैट इज हाउ अ जेरेंड फंक्शंस एज द ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इन अ सेंटेंस. आई थिंक दिस इज व्हाट वी हैव डन फॉर gerunds, right? Yes, Haridas, do you have another question? No, right? I'll just lower your hand. Okay. Punita? Yes, ma'am. It functions in a 4 form, na? Subject, subject complement, object, and object complement. बिल्कुल, चारों फॉर्म्स में काम करता है gerund. Alright? Okay, ma'am. Yes, ma'am. तो ये हमने सीखा है gerund के बारे में. This is what we have covered in gerund. Now coming to infinitives. Infinitives में हमने देखा that it is quite similar to gerunds because it has a structure that looks like verb, but it actually functions as other parts of speech. 3 parts of speech के वो काम करते हैं. जो हमारे infinitive है क्या क्या? Nouns, adjectives, adverbs. Nouns, adjectives, adverbs. कैसे बनाए जाते हैं? To eat, to go, to dance. To plus base form of the verb, जिसको bare infinitive भी बोलते हैं. So to plus bare infinitive equals to infinitive. Okay. So noun में किस चीज का काम कर सकता है हमारा infinitive? Noun में 3 चीजों का काम कर सकता है infinitive. What are the 3 things? Subject, object, object complement. Subject complement नहीं बन सकता. Okay? Remember कि subject complement नहीं बन सकता.
सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. सब्जेक्ट कैसे बनेगा? बहुत सिंपल है. इट विल फंक्शन एज द डूअर ऑफ द एक्शन, या उसके बारे में कुछ बोला जाएगा. इट विल बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. टू स्टडी इज माई ड्रीम. टू स्टडी इज माई ड्रीम. टू स्टडी सब्जेक्ट इज लिंकिंग वर्ब. माई ड्रीम इज अवर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. ओके, टू स्टडी जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है. क्या है? इंफिनिटिव है. इंफिनिटिव फंक्शनिंग एज सब्जेक्ट. जी मंजू बताइए. Ma'am, to err is human, to forgive is divine. And यस, ma'am, where is complement? Can you explain about it? human is the complement here. To err And- is the, yes, Ma'am, to forgive, what is this to forgive? yes. देखिए, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो टू err is human, to forgive is divine. ये दो अलग अलग क्लॉजेस है. टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस joined by one semicolon, राइट? मैंने आपको बोला था कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हम सेमीकोलन से भी जोड़ सकते हैं और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से भी जोड़ सकते हैं. यस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, नो, यस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से भी जोड़ सकते हैं. सो यहाँ पर सेमीकोलन से जोड़ा गया है. सो दो अलग अलग क्लॉजेस है, मतलब अपने अपने सब्जेक्ट होंगे, अपने अपने वर्ब होंगे. इसका सब्जेक्ट है टू err, इसका सब्जेक्ट है टू forgive. दोनों ही इंफिनिटिव है. is दोनों ही लिंकिंग वर्ब्स है, राइट? Right. ह्यूमन, डिवाइन, दोनों नाउन्स है. दोनों क्या काम कर रहे हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहे हैं. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहे हैं. मतलब है टू err का मतलब होता है एरर, टू मेक मिस्टेक, इक्वल्स टू गलती. ह्यूमन. Yes. ह्यूमन का मतलब क्या है? बीइंग ह्यूमन. ओके, सो इंसान Hmm. होने का मतलब है कि हम गलती करेंगे. टू फॉरगिव इज डिवाइन. पर माफ कर देने का मतलब क्या है? कि हम डिवाइन है. ओके, डिवाइन का Yes. हिंदी मुझे नहीं पता. दैवीय शक्ति. दैविक, दैविक, हम दैविक है. ओके, दैट इज व्हाट Yes. इट मींस. सो टू फॉरगिव इक्वल्स टू डिवाइन. अंडरस्टूड मंजू? Yes, ma'am. This is what an infinitive looks as a subject of a sentence. Okay. सेकेंड था, हमने ऑब्जेक्ट डिस्कस किया है. एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्ब, ऑब्वियसली सेंटेंस का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. आई एम ट्राइंग टू स्टडी. लेट्स ट्राई टू डांस. यू नो टू कुक, या फिर आई होप टू गो देयर. ओके, सिंपल. आई एम ट्राइंग टू स्टडी, लेट्स ट्राई टू स्टडी. इसमें क्या है? ट्राई वर्ब है, टू स्टडी हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. सिंपल. ओके, नेक्स्ट इट कैन बी ऑब्जेक्ट्स इन रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टिंग वर्ब का भी ऑब्जेक्ट बन सकता है. he said to dance, he asked me to dance, he told to help, or he asked to help us fix the car, so on and so forth. जैसे ही हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब आएगा, उसके बाद अगर आ रहा है टू हेल्प, टू ईट, टू डांस, वो हमारा इंफिनिटिव है, and it is functioning as object of the reporting verb. Object of the reporting verb. Okay. Next we saw how it is used as object complement. Object complement की तरह कैसे यूज होगा? बिल्कुल ऑब्जेक्ट के बाद में लग जाएगा और ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देगा हमें. Okay, it will give us extra information about the object, but it will be important to the sentence as well. Sentence के meaning के लिए काफी important हो जाएगा. And we saw that as adjectives, it can either describe subjects or it can describe our object. Okay, so infinitive can function as adjectives. अभी तक हमने तीन यूजर्स देखे, तीनों as nouns थे. Infinitives as nouns, object, subject, object complement, तीनों noun की तरह यूज किए जा रहे हैं. अब infinitive को यूज कर रहे हैं हम adjective की तरह, right? क्या करेंगे? किसी ना किसी noun को describe करेंगे. Subject और object को describe कर सकते हैं, दोनों ही noun है, right? The best person to consult is your counselor. The best person to consult is your counselor. The best person is the subject. To consult is describing the subject of the sentence, right? And describing an object, the teacher assigned several exercises to complete. Several exercises को describe किया जा रहा है. What kind of exercises? Exercises that need to be completed. Alright? And infinitives as adverbs क्या काम कर रहे हैं? It is telling us why something is being done. Last है infinitives as adverbs, वो क्या काम कर रहे हैं? Why something is being done. I started running to improve my health. I started running to improve my health. Why did I start running? मैंने दौड़ना क्यों शुरू किया? To improve my health.
right? So it is an infinitive as adverb. Next, in order to, so far as to, sorry, so as to, ये भी use करते हैं हम infinitives as adverbs के साथ. I think Shafiq was making a sentence like this yesterday. We must leave now in order to catch our train. He's been studying all week so as to improve his grades, right? So with this, I think we completed infinitives. हमने इन्फिनेटिव्स खत्म कर लिया था इस तरीके से. सो जेरेंड और इन्फिनेटिव का इतना ही था जो हमने डिस्कस किया था. And we saw what is the difference between gerund and infinitive when we are using different verbs. So, Ji Manju, yes? Please scroll down.